In this module, we shall introduce group action on a set. We define a binary operation star on a set as to be a function mapping S cross S into S. The function star gives us a rule for multiplying an element S1 in S and an element S2 in S to yield an element S1 star S2 in S. तो बाइनरी ऑपरेशन को इससे पहले हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ग्रुप एक्शन से क्लोजली रिलेटेड है. मोर जनरली फॉर एनी सेट्स A, B and C, we can view a map star A cross B to C as defining a multiplication where any element A of A times any element B of B has as value some element C of capital C. Of course, we write A star B equal to C or simply A B equal to C. We can use the multiplication operation. We can replace star by multiplication operation. In these modules, we will be concerned with the case where X is a set, G is a group, and we have a map star from G cross X to X. We shall write star Gx as G star X or Gx. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, जो हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार था, जिस तरह से हमने डिफाइन किया था, जस्ट हमने ये चेंज किया है, नोशन चेंज की है कि G जो सबसे पहला फैक्टर है वो ग्रुप है और दूसरा फैक्टर हमारे पास सेट ही है, और G क्रॉस X जो है वो अंडर द मैपिंग स्टार X पे मैप हो रहा है और इसको हम ग्रुप एक्शन कहेंगे. लेट्स डिफाइन इट फॉर्मली. Let X be a set and G a group. An action of G on X is a map star from G cross X to X such that the following conditions are satisfied. Number 1, Ex equal to X. For all X belonging to X, E is the identity element of G. G1 G2 X equal to G1 within bracket G2 X for all X belonging to X and all G1 G2 belonging to G. Under these conditions X is called a G set, और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि G is acting on the set X and it gives us a G set. Now we consider an example. Let X be any set and let H be a subgroup of the group of permutations of X, Sx, symmetric group Sx of X. Of all permutations of X, then X is an H set, where the action of sigma belonging to H on X is its action as an element of Sx, symmetric group Sx, so that sigma X equal to sigma X.
Sigma is a permutation here, permutation on the set capital X. तो सिग्मा x के ऊपर अप्लाई हो रहा है सिग्मा और x कैपिटल X का कोई एलिमेंट है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो परमुटेशंस हमने स्टडी की थी वो ग्रुप एक्शन की एक एग्जांपल है. फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x.